Prime Minister, we are not surprised that the Prime Minister of Pakistan refuses to acknowledge the attack on our security forces in Pulwama as an act of terrorism. Prime Minister of Pakistan has neither chosen to condemn this heinous act nor condoled with the bereaved families. Disclaiming any link between the terrorist attack and Pakistan is an oft-repeated excuse by Pakistan. The Pakistani Prime Minister has ignored claims made by the Jaish-e-Mohammed as well as by the terrorist who perpetrated this heinous crime. It is a well-known fact that Jaish-e-Mohammed and its leader Masood Azhar are based in Pakistan. This should be sufficient proof for Pakistan to take action. The Prime Minister of Pakistan has offered to investigate the matter if India provides proof. This is a lame excuse. In the horrific attack in Mumbai on 26/11, proof was provided to Pakistan. Despite this, the case has not progressed for the last more than 10 years. Likewise, on the terror attack on Pathankot Air Base, there has been no progress. Promises of guaranteed action ring hollow given the track record of Pakistan. The Prime Minister of Pakistan has referred to Naya Pakistan with a new thinking. In this Naya Pakistan, ministers of the current government publicly share platforms with terrorists like Hafiz Saeed, who have been proscribed by the United Nations. Pakistan's Prime Minister has called for dialogue and expressed his readiness to talk about terrorism. India has repeatedly stated that it is ready to engage in a comprehensive bilateral dialogue in an atmosphere free from terror and violence. Pakistan claims to be the greatest victim of terrorism. This is far from the truth. The international community is well acquainted with the reality that Pakistan is the nerve center of terrorism. It is regrettable that the Pakistani Prime Minister has insinuated that India's response to the terrorist attack is determined by the forthcoming general election. India rejects this false allegation. India's democracy is a model for the world, which Pakistan would never understand. We demand Pakistan to stop misleading the international community and to take credible and visible action against the perpetrators of Pulwama terrorist attack and other terrorists and terror groups operating from areas under their control. हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाज़ें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। पहले तो कौन सा दुनिया का कानून किसी भी एक शख्स या मुल्क को जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनने की इजाजत देता है? ये कौन से इंसाफ के निजाम में है? दूसरी चीज, आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में ये बड़ी बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। और उसके बाद बात किधर जाती है? हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए मैं ये उम्मीद रखता हूं कि बेटर सेंस विल प्रिवेल, हम इसमें अकल करेंगे, हिकमत इस्तेमाल करेंगे और ये मसला जो आखिर में हल होगा, जिस तरह अफगानिस्तान में, ये भी डायलॉग और बातचीत से हल होगा। अगर आपने माजी के अंदर ही फंसे रहना है और हर बारी किसी किस्म का कोई कश्मीर में सानिया हो, आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना है, तो बजाय ये कि आप कश्मीर का मसला उसकी तरफ कोई डायलॉग शुरू करें, आगे बढ़े, ये तो बार बार पाकिस्तान को एक विपिंग बॉय बनाए रखेंगे आप। मैं आपको वाज़े तौर पे कह रहा हूं कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है, नई सोच है। हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में है कि ना हमारी जमीन से कोई जाके बाहर दहशतगर्दी करे और ना बाहर से आगे कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे। हम स्टेबिलिटी चाहते हैं।
तो मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। 6 दिन लग गए उसको निंदा करने में और जवाब देने में। कठपुतली है इमरान खान, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान के आतंकवादियों की और पाकिस्तान की सेना का कठपुतली प्रधानमंत्री है। इसकी कोई अपनी सुनवाई नहीं है। 6 दिन लग गए इसको आके बात करने में। और जिन लोगों ने ये आतंकवादी हमले किए, जैशे मोहम्मद के मौलाना अजहर मसूद, वो रावलपिंडी के पाकिस्तान की आर्मी के मिलिट्री हॉस्पिटल में उसका इलाज कराए, हाफिज सईद को पाकिस्तान में संभाल के रखे, शेख सलाउद्दीन को अपना दामाद बना के रखा हुआ है पाकिस्तानियों ने पीओके के अंदर। ये सब ड्रामेबाजी है। मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करे इमरान खान, और वो सबूत मांगता है कि उसको सबूत दें। इमरान खान को सबूत नहीं, इमरान खान को जवाब देंगे। युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की है। कश्मीर के अंदर आतंकी हमला पुलवामा में, वो देश के खिलाफ जंग छेड़ी गई है। हमला पाकिस्तान ने शुरू किया है, इस हमले का खात्मा हिंदुस्तान करेगा। युद्ध शुरू पाकिस्तान ने किया है, युद्ध का खात्मा हिंदुस्तान करेगा। हम अपनी टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर पाकिस्तान को जवाब देंगे। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। अगर हमारी सेना, हमारे पुलिस के लोग, हमारे लोग जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जान की कुर्बानियां देकर जम्मू कश्मीर की रक्षा ना करे, तो पाकिस्तान वाले कश्मीर को बर्बाद करके रख दें। पाकिस्तान का दूसरा नाम आतंकिस्तान है। ये टेररिज्म को पनाह देना नहीं, उसको पैदा करने वाला देश है। जो कल का ऑपरेशन था स्पेसिफिकली, क्योंकि जो इंजरीज और जो हमारे मार्टरडम्स हुई हैं, मार्टर्स हमारे हुए हैं, इसके 2-3 मेन रीजन हैं। फर्स्ट वन, we did not want the civilian casualties to happen, and as you are aware, other than the one civilian fatal casualty which happened due to the terrorist fire in the initial stages itself, not a single civilian has been injured or killed in this encounter, which lasted more than 17 hours, and that is the risk we took it on our chin. And one more thing I would like to tell you, Brigadier Harbir Singh, who is also injured, he was on leave at home. When he realized that in the midnight the operation has started, he cut short his leave voluntarily, he rejoined, and he came back to Kashmir and went straight to the operational site. And he was leading his men from the front. So including DIG Amit Kumar, again he was leading his men from the front, and you would see the number of casualties of officers and the senior NCOs. It shows one thing, that our commanders were leading the operation from the front, and we were trying to achieve nil civil casualties, which has resulted in casualties to our boys. And I would like to assure you this will continue. But at the same time, since this question is asked, I also want to convey a message to the Awam. Please stay away from the encounter site during the encounter and after the encounter, for your own safety, because during the encounter, during the crossfire, something can go wrong, and after the encounter, because of the leftover explosives, it may cause damage or injury or death to anyone who comes to that place. So it's my humble request to everyone, please stay away from the encounter site during and after the encounter. First of all, a question about Kamran. Gentlemen, Kamran was Chief Operations Commander of Jaish-e-Mohammed in Kashmir. He was a Pakistani, and he was being handled by the Jaish-e-Mohammed of Pakistan in conjunction with ISI and Pakistan Army from across the border. So he was the top commander of the Jaish-e-Mohammed, which carried out the 14th February convoy attack. So we have eliminated the top commander of the Jaish-e-Mohammed which carried out the attack. Now whether who was involved, what was the role of each and every other player in that attack on the convoy, as I told earlier, is a matter of investigation. I would not like to share the operational details of that incident. Now coming to the second point about the Kashmiri youth and the Sadbhavna. Sadbhavna is a very well thought out, well planned out way we are going about
giving a healing touch to the Kashmiri youth, the Kashmiri far-flung areas. That will continue, and we every time renew it, we review it, and we try and make it more effective, and we will continue to do that.